Hey YouTube fam, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. In today's video lecture, we are going to dive deep into a very important phenomenon and that is known as Dale's vasomotor reversal. We will also see what do we mean by Dale's vasomotor re-reversal. But before diving into today's video lecture, let us summarize कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कौन सी चीजें डिस्कस की थी. In previous video lecture, we saw what is the effect of adrenaline, what is the effect of noradrenaline, and we also saw what is the effect of isoprenaline. नाउ हम लोग ने वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बनाया था एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. इन दिस पर्टिकुलर टेबल वी डिस्कस्ड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन ऑन आवर ब्लड प्रेशर. नाउ एज यू कैन रिकलेक्ट कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है दे आर ऑफ two types. The very first one is known as systolic blood pressure and the second one is known as diastolic blood pressure. Then we talked about the effect of these drugs on our heart rate. So heart rate जब हम discuss करते हैं we have direct action and we have a reflex action. एंड फिर हम जब ये डायरेक्ट एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन को जब हम मिला लेते हैं जो उसका नेट इफेक्ट होता है दैट इज अवर ट्रू इफेक्ट. सो ये सारी की सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेनालिन दैट इज नोन एज Dale's vasomotor reversal. Now ये जो Dale's vasomotor reversal होता है that is purely an adrenaline phenomenon. Now ये जो adrenaline है what is the another name for adrenaline? That is epinephrine. So अगर कोई MCQ में आपको अगर क्वेश्चन दिया है कि which of the following drug will show Dale's vasomotor reversal, वहां पे if you find adrenaline you need to mark that option. but अगर adrenaline ना हो and epinephrine दिया हो you need to mark epinephrine because adrenaline and epinephrine are same drugs. Similarly जो noradrenaline होता है we call it as norepinephrine एंड आइसोप्रेनालिन का दूसरा नाम है आइसोप्रोटेरिनॉल. सो इन दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन वी से कि ये जो एड्रेनालिन है दैट इज एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर. वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर कि ये जो एड्रेनालिन है दैट इज अ नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट as well as it is non-selective beta receptor agonist. Now when we talk about vasomotor, vasomotor can be related something to our blood vessel. Now blood vessel में कौन से adrenergic receptor होते हैं? We have alpha 1 adrenergic receptor and we have beta 2 adrenergic receptor. Now जब हम लोग अल्फा 1 को स्टिम्युलेट करते हैं there will be vasoconstriction and because of that vasoconstriction there will be a rise in blood pressure. उसका opposite is whenever we are stimulating our beta 2 adrenergic receptor it will produce vasodilation and because of
वेजोडाइलेटेटरी इफेक्ट, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, दैट विल ड्रॉप. नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की बात है. जो हमारे अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर, एंड जो हमारे बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, दे आर सेंसिटिव रिसेप्टर. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव रिसेप्टर्स? सेंसिटिव का ये मतलब होता है कि इवन इफ वी गिव लो डोज ऑफ एड्रेनालिन, दिस लो डोज ऑफ एड्रेनालिन कैन स्टिम्युलेट माय बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. बट अगर मेरे को अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करना है, we need to give high dose of adrenaline. So let us take and let us apply this concept of strong and sensitive in our Dale's vasomotor reversal. Now, as you can see, this particular line indicates our normal blood pressure, and if I inject high dose of adrenaline, what will be its effect? So let's suppose यहां पे मैंने high dose of adrenaline दिया. This high dose of adrenaline is having the potency to stimulate my alpha 1 adrenergic receptor, as well as it is having the capacity to stimulate my beta 2 adrenergic receptor. बट रिमेंबर, जब भी हम एड्रेनालिन को हाई डोज में देते हैं, अल्फा 1 एक्शन इज प्रीडोमिनेटिंग माय बीटा 2 एक्शन. सो अगर अल्फा 1 एक्शन इज ओवर पावरिंग माय बीटा 2 एक्शन, क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो मेरा ब्लड प्रेशर है, दैट विल राइज. यही सेम चीज यहां पे हो रही है. व्हेन आई गिव हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर स्टिम्युलेटेड, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर ऑल्सो स्टिम्युलेटेड, बट अल्फा 1 की जो पावर है, दैट इज ओवर पावरिंग माई बीटा 2 एक्शन. So we see there is a rise in blood pressure. Now जैसे जैसे time pass होगा, this adrenaline will be metabolized in our body. Now जब भी ये adrenaline metabolize होगा, initially the dose was high, and slowly after metabolism जो dose होगा वो कम होता जाएगा. अगर डोज कम हो रहा है, दैट मीन्स माई एड्रेनालिन इज लूजिंग इट्स अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक्शन. व्हाई? बिकॉज अल्फा 1 को स्टिम्युलेट करने के लिए वी नीड हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन. बट यहां पे आफ्टर मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे द डोज ऑफ एड्रेनालिन इज बिकमिंग लो. बट एज आई सेड कि ये जो बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, दे आर सेंसिटिव इन नेचर. तो लो डोज में बीटा 2 एक्शन विल बी प्रीडोमिनेंटली फाउंड, एंड बीटा 2 को जब हम स्टिम्युलेट करते हैं, देयर विल बी वेजोडाइलेशन, एंड देयर विल बी फॉल इन आवर ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ बीटा 2 एक्शन. Now, this particular phenomenon is known as biphasic response. Now, what do we mean by biphasic response? जब हम स्कूल में थे, we saw different phases of moon. Similarly, यहाँ पे भी our adrenaline is showing 2 phases. Bi का मतलब होता है 2,
इन फर्स्ट फेज जब हम हाई डोज एड्रेनालिन देते हैं, देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर, दैट इज अवर फेज 1. एंड जब ये एड्रेनालिन प्रॉपरली मेटाबोलाइज होगा, उसका जो डोज है दैट विल बी रिड्यूस्ड, and in a low dose adrenaline it will stimulate my beta 2 adrenergic receptor and we see fall in blood pressure, and this particular response is known as biphasic response of adrenaline. क्या ये Dale's vasomotor reversal है? The answer is no. Now let's experiment. Let's say मैं एक particular patient को अल्फा ब्लॉकर देता हूं. नाउ इफ आई गिव अल्फा ब्लॉकर टू अ पेशेंट, जो एड्रेनालिन का अल्फा 1 रिसेप्टर पे जो काम था दैट विल नॉट टेक प्लेस, एंड अगर वो अल्फा 1 पे स्टिम्युलेट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एड्रेनालिन विल वर्क ऑन माय बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. सो मैं क्या करता हूं, अल्फा ब्लॉकर देता हूं एंड आई गिव दैट पर्टिकुलर पेशेंट एड्रेनालिन आफ्टर अल्फा ब्लॉकर. सो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? एड्रेनालिन fails to work on my alpha 1 adrenergic receptor. Why? Because alpha 1 को हमने ब्लॉक कर दिया है. So ये जो एड्रेनालिन है that will purely work on my beta 2 adrenergic receptor, and we see fall in our blood pressure, and this particular phenomenon is known as Dale's vasomotor reversal. So let us see the definition. It is administration of adrenaline after alpha blocker produces only fall in blood pressure due to predominant action on my beta 2 adrenergic receptor, and this is known as Dale's vasomotor reversal. Now और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. लेट्स से पहले मैंने अल्फा को ब्लॉक किया. नाउ आई एम ब्लॉकिंग माय बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. सो आई गिव द पेशेंट बीटा ब्लॉकर, and after giving beta blocker I inject adrenaline. Now ये जो adrenaline है that will not be able to stimulate my beta 2 adrenergic receptor, so there will be only rise in the blood pressure, and this particular phenomenon is known as Dale's vasomotor reversal. So let us take a look on our definition. It is administration of adrenaline after beta blocker produces a rise in blood pressure, that is alpha 1 action. And even यहाँ पे एक important point नोट करने की बात है कि even if the dose of adrenaline falls, अगर हमारा जो एड्रेनालिन है इन द लो डोज वॉज स्टिम्युलेटिंग माय बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बट यहाँ पे हमने बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है. सो अगर हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद लो डोज एड्रेनालिन विल नॉट बी एबल टू स्टिम्युलेट माय बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, and we will see this particular ये जो ब्लड प्रेशर है that will come back to normal. यहाँ पे fall in blood pressure नहीं दिखेगा, and this is known as Dale's vasomotor reversal. Now a question: will noradrenaline show Dale's vasomotor reversal? The answer is no. Why? For our Dale's vasomotor reversal, we need beta 2 adrenergic receptor action, but noradrenaline is not having
any significant beta 2 adrenergic receptor action, so noradrenaline will not show this particular Dale's vasomotor reversal phenomenon. Now, why it is known as Dale's vasomotor reversal? So ये जो phenomenon है, that was found by a very important scientist, and वो scientist का नाम डेल था. वासोमोटर का मतलब होता है something related to our blood vessel, and reversal मतलब as you can see इसका उल्टा बेसिकली हो रहा है. That means this particular graph जो पहले ऊपर जा रहा था because of alpha 1 action, after blocking alpha receptor there is only fall in blood pressure. That means ये particular जो ग्राफ है वो उल्टा हो गया. Hence it is known as Dale's vasomotor reversal. Now why it is known as Dale's vasomotor re-reversal? So as you can see ये जो ग्राफ है जो पहले नीचे था, now after the administration of beta blocker there is only rise in the blood pressure. So as you can see this was reverse. फिर से हमने इसको और रिवर्स किया, that is re-reversal. Hence it is known as Dale's vasomotor re-reversal. Now एक important point, adrenaline whenever we give in slow IV infusion or subcutaneous injection, it causes a rise in systolic blood pressure but a fall in diastolic blood pressure. Now ऐसा क्यों? Whenever we are giving adrenaline slowly, that particular adrenaline will increase my systolic blood pressure. Why? Because it will stimulate our human heart, and जब भी हम हार्ट को स्टिम्युलेट करते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, एंड अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ा माय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. बट यहां पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों कम हो रहा है? द आंसर इज वेरी सिंपल. जब हम स्लो इन्फ्यूजन देंगे द डोज ऑफ एड्रेनालिन इज not sufficient to stimulate my alpha 1 adrenergic receptor, but our beta 2 adrenergic receptor, they are sensitive, and even in low dose our adrenaline can stimulate that beta 2 adrenergic receptor, produce vasodilation, and significantly it can reduce my diastolic blood pressure. Now second thing, जब हम एड्रेनालिन को रैपिड आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं it will increase my systolic blood pressure as well as it can increase my diastolic blood pressure. Why? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का एक ही चांस है. दैट मीन्स अवर एड्रेनालिन इज स्टिम्युलेटिंग माय बीटा 1 adrenergic receptor present in our human heart. Now why there is increase in diastolic blood pressure? अगर हम रैपिडली एड्रेनालिन दे रहे हैं दैट मीन्स दैट डोज ऑफ एड्रेनालिन is sufficient to stimulate my alpha 1 adrenergic receptor, and alpha 1 को जब हम stimulate करेंगे there will be vasoconstriction, and because of that vasoconstriction there will be rise in my diastolic blood pressure. but जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा our adrenaline will be metabolized, फिर से वो लो डोज में आएगा, and in low dose again it will stimulate my
beta 2 adrenergic receptor. So we see again a fall in diastolic blood pressure. So ये चीजें याद रखना बहुत important है. Now let us see the use of adrenaline. The very first use of adrenaline is in anaphylactic shock. Adrenaline in 0.3 to 0.5 ml of 1:1000 solution is administered intramuscularly. Now यहाँ पे the very first thing we need to understand is what do we mean by 1:1000 solution. 1:1000 का ये मतलब होता है, ये जो फर्स्ट वन होता है that always represents my drug, and ये जो रेशो के बाद वाला टर्म है that defines our solution. So I can say that 1 part of adrenaline is present in 1000 ml of solution. Now ये 1 part का क्या मतलब होता है? 1 part का मतलब होता है that particular drug is present in 1 gram. यहाँ पे जो units है that is always in gram. That means 1 gram of adrenaline is present. Now ये जो second होता है that is 1000. That 1000 solution is in ml. So अगर मैं 1 ग्राम को mg में कन्वर्ट करता हूं that will be 1000 mg. ml 1000 ml. So here 1000 and 1000 will get cancelled out each other and we get 1 mg per 1 ml. That is the meaning of 1:1000 solution. So एक चीज याद रखना, जब भी आपको फ्यूचर में कुछ रेशो में दिया है, फॉर एग्जाम्पल हियर वी सॉ 1:1000. सो जो रेशो के पहले वाला जो नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स आवर ड्रग एंड उसका यूनिट क्या है? ग्राम्स है. जो रेशो के बाद वाले जो नंबर होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स माय सॉल्यूशन एंड उसका जो यूनिट होता है दैट इज ml. एंड वहां से आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ माय ड्रग इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूशन. सो ये जो एड्रेनालिन है इट कैन बी गिवन इन केस ऑफ anaphylactic shock. Now the question is, what do we mean by anaphylactic shock? So we have our immune system. Now ये जो immune system होता है normally it has to protect our body from different infection. But whenever this immune system is activated rapidly, यानी कि हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, वी कॉल इट एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नाउ ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स. उसमें से ये जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होते हैं दैट बिलोंग्स टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम तो बहुत सारे होते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर 2 important things. Whenever a person is in anaphylactic shock, उसका जो ब्लड प्रेशर है that is rapidly falling. Why? Because in anaphylactic shock there is widespread vasodilation. And because of that widespread vasodilation, there is fall in our blood pressure. Secondly,
जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है that is blocked, so the person is not able to breathe in or breathe out air properly. So why adrenaline is drug of choice during anaphylactic reaction? Number 1, हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है. So adrenaline, by working on beta 1 adrenergic receptor, it can stimulate my human heart by increasing heart rate and force of contraction. अल्फा 1 mediated vasoconstriction भी कर सकता है एड्रीनालिन. Because of alpha 1 mediated vasoconstriction, there will again be rise in my blood pressure. Alpha 1 mediated vasoconstriction से my mucosal edema and also laryngeal edema is getting suppressed. That is very important. And as I said कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करना है. So for that our respiratory system is having beta 2 adrenergic receptor, and adrenaline can stimulate this beta 2 adrenergic receptor. So it will open up my airways. That means it will have bronchodilatory action, and also it reduces the release of inflammatory mediators from the mast cells. And also remember कि ये जो adrenaline है, that is a physiological antagonist of histamine. Now the question is, हम adrenaline ही क्यों यूज करते हैं? Why we are not using noradrenaline? Remember, noradrenaline is not having a significant beta 2 adrenergic receptor action. Noradrenaline अगर हमने दिया, it can significantly increase my blood pressure, but अगर हमने पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन अप नहीं किया, the person will die. So we prefer adrenaline over noradrenaline. Now ये जो adrenaline है, that is administered by which route? So normally जो adrenaline होता है, we inject that adrenaline intramuscularly. Second option is subcutaneous. But remember, adrenaline is not preferred by IV. So in anaphylactic shock, we will take 0.3 to 0.5 ml of 1:1000 solution of adrenaline, and we will give it to the patient. The second use of adrenaline is in bronchial asthma. Now the question is, what do we mean by asthma? Simply remember कि asthma is nothing but, in this particular case, जो हमारे airways होते हैं, they are getting constricted, and because of that constriction, the person is not able to breathe properly. So as our adrenaline is having a very powerful beta 2 mediated action, adrenaline can be used in case of bronchial asthma. कितना adrenaline? Again 0.3 to 0.5 ml of 1:1000 solution is given subcutaneously. It can also be given as an inhalation. But ये जो adrenaline है, we do not use in case of bronchial asthma. The question is why? The answer is very simple. Adrenaline is having a very strong, potent effect on our human heart. So अगर मेरे को अस्थमा है and if you are giving me
एड्रीनलिन, अस्थमा तो ठीक हो जाएगा, but it will also increase my heart rate, it will increase my force of contraction, and also अगर एड्रीनलिन हमने IV फॉर्म में दिया, it can cause arrhythmias. So adrenaline can be used in case of bronchial asthma, but we do not prefer adrenaline क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं which is having selective action on our beta 2 adrenergic receptor. The third use of adrenaline is in cardiac arrest, and यहाँ पे we give adrenaline as intravenously in the form of 1:10,000, that is 0.1 mg per ml. Now the question is, what do we mean by cardiac arrest? Cardiac arrest का simple ये मतलब होता है our heart has stopped beating. So to stimulate our human heart, we can give adrenaline, and along with adrenaline, we need to give other important resources. For example, if you see a particular patient who is suffering from cardiac arrest, we give CPR. Now, what is the full form of CPR? CPR stands for cardiac pulmonary resuscitation. In this, our main aim is to stimulate our human heart and patient को जिंदा रखना है, जिंदा करना है rather. In that case, we can give intravenous adrenaline. But थोड़ी ही देर पहले मैंने बोला था कि adrenaline is not given intravenously. But why we are giving adrenaline here? Because adrenaline अगर हमने IV दिया, it can rapidly stimulate our human heart, and this is a life threatening situation. हमारा पहला काम यही होना चाहिए to stimulate my human heart. So in that case we can give intravenous adrenaline, but जो डोज है वो हमने कम कर दिया है, that is 0.1 mg per ml. Then let's take a look on different more uses of adrenaline. Adrenaline, it prolongs the duration of local anesthesia. Now adrenaline can be given along with lignocaine. By giving adrenaline along with lignocaine, it delays the absorption of local anesthesia by vasoconstriction effect. As we all know, ये जो adrenaline है, that is having a very strong action on our alpha 1 adrenergic receptor. So by that particular action, it will delay the absorption of local anesthesia and duration of action will be enhanced. The next use of adrenaline is control epistasis and other capillary oozing. It can be used as a local hemostatic in order to control the bleeding, which is followed by tooth extraction and during surgical procedures. For example, nose, throat, larynx, etc. because of its vasoconstriction effect. Now यहाँ पे we need to understand what do we mean by local effect. Local effect का ये मतलब होता है कि जहाँ पे हमें effect चाहिए we will use in that particular area. For example, अगर मेरे fingers में कुछ कट लग गया, so I will use medication directly on my wound. That means I am locally giving that particular medication where I need the response. So adrenaline अगर हमने tooth extract किया,
टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद देयर कैन बी हैवी ब्लीडिंग. टू स्टॉप दैट हैवी ब्लीडिंग वी कैन गिव एड्रेनालिन. व्हाई? बिकॉज ऑफ vasoconstriction effect of adrenaline, it will reduce my bleeding. It can also be given in case of glaucoma, but हम direct adrenaline नहीं देते. We administered it as a prodrug and the name of that drug is Biphasic. Now ये जब हम glaucoma discuss करेंगे, we will understand this. Now let us see some of the uses of noradrenaline. Noradrenaline, it works on alpha 1, alpha 2 and beta 1 adrenergic receptor. This use of noradrenaline is mainly in hypotensive state. Hypotension का क्या मतलब होता है? Simply there is a reduction in my blood pressure. वहां पे to increase the blood pressure we can give noradrenaline. Why? Because beta 1 को जब हम stimulate करेंगे it will increase my cardiac output. Because of increase in cardiac output it can increase my systolic blood pressure, and also this is having alpha 1 adrenergic receptor action. So by alpha 1 adrenergic receptor action, it will produce widespread vasoconstriction, and because of that my diastolic blood pressure can also be increased. So the main use of noradrenaline is in hypotensive state. But remember, because of widespread vasoconstriction, it may decrease the blood flow to the vital organs. For example, kidney हो गया, then mesenteric हो गया, due to its potent alpha action. So we need to use this particular noradrenaline very cautiously. Let's see the use of isoprenaline. Isoprenaline is also known as isoproterenol. It mainly works on our beta 1 and beta 2 adrenergic receptor. It can be used in case of bronchial asthma. Why? Because it is having a very potent action on my beta 2 adrenergic receptor, and also it can be used in order to increase the heart rate in heart block by beta 1 action. Now what do we mean by heart block? हमने बेसिक कार्डियक में डिस्कस किया था कि वी हैव साइनोएट्रियल नोड. दैट साइनोएट्रियल नोड इज प्रोड्यूसिंग अ वेव ऑफ depolarization. Now between the atria and ventricle we have atrioventricular node, and वहां से impulse pass होने चाहिए in order to reach to our ventricles. But in heart block ये जो atrioventricular node है that is getting blocked, so that अगर मेरे AV node block कर दिया, so जो भी impulse ऐसे node produce कर रहा है that will not properly reach to my ventricles. So by giving isoprenaline I can increase the wave of depolarization production in my sinoatrial node. उससे क्या होगा? वेव ऑफ depolarization अगर ज्यादा होंगे, chances are कि more impulse can pass through that atrioventricular node. So in order to increase my heart rate in heart block, we can give isoprenaline. Now ये जो isoprenaline है, we can give it in bronchial asthma. But again, अगर मेरे को bronchial asthma है, if you give me isoprenaline
it will have unwanted effect on my human heart. So for specially bronchial asthma, we use selective beta-2 adrenergic receptor agonist. The name are salbutamol, terbutaline, salmeterol, and we have formoterol. These are selective beta-2 agonists which can be used in case of bronchial asthma. Last one. Beta-2 receptors are also present in pregnant women uterus. So we have two main drugs, that is Ritodrine and we have Isoprenaline. ये जो drug है, they will relax my uterus and it will delay the premature labor. Now what do we mean by premature labor? You know कि अगर कोई बच्चा है, he or she requires a proper maturity phase. अगर ये प्रॉपरली बच्चा मैच्योर नहीं हुआ, वी से कि 37 वीक्स के अगर पहले लेबर पेन आ रहा है, दैट इज अ प्री मैच्योर लेबर पेन, एंड अगर यहाँ पे मदर ने डिलीवरी दी, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल नॉट बी मैच्योर इनफ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है. So in order to avoid this premature labor, we give uterine relaxants. उससे क्या होगा? It will relax my uterus and it will help to delay my premature labor. And यहाँ पे ये जो drugs होते हैं, which are uterine relaxants, ये drugs को एक separate नाम है. These drugs are known as tocolytic agents or tocolytic drugs. So that's it for today's video lecture. If you find value in my video lecture, please do subscribe to my YouTube channel. Press that bell icon. Please like the video and share it with your friends. In the next video lecture, we will see more directly acting sympathomimetic drugs, and then we will move on to indirectly acting sympathomimetic drugs. So see you in the next video. Till then, see ya, bye bye, have a good day.